Students, Jinalisha welcomes you all on behalf of Saraswati International Academy. Today we will begin with the second part of the chapter Body Fluids and Circulation. In the previous video, students, we have studied regarding the blood, the components of the blood, that is the fluid part which is called as the matrix, and then the formed elements, or you can say blood corpuscles, which includes RBCs, WBCs and platelets. We have also studied regarding the blood grouping, in which we have studied two types. One is ABO blood grouping and another one is RH grouping. Now today we will study one of the most important topic, that is the coagulation of the blood. Now students, say for example when we cut a finger, the blood comes out from that particular, basically wound में से bleeding होता है, but after short time we see that bleeding stops. So वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, और यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग. So when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. So what is the reason for that? Suppose आपको कोई भी इंजरी होती है, so for some period of time, थोड़े टाइम के लिए ही blood निकलता है. Bleeding occurs for some time only. It doesn't occur for the longer time. The blood stops coming out, or you can say the blood stops flowing. So what is the reason for this? So blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. Trauma is a great shock, or you can say sadness. So basically जब bleeding होता है तो blood के अंदर एक mechanism होती है. That mechanism is called as clotting, or also it is called as coagulation. This clotting or coagulation occurs in response to injury or the trauma. So what is blood clotting? It is a mechanism to prevent the excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum, or scum is nothing but a layer or covering formed at the site of a cut or injury over a period of time. जहाँ पे भी कट हुआ है, जहाँ पे भी इंजरी हुआ है, so after certain period of time आपको वहाँ पे एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का लेयर दिखता है. What is that dark reddish brown layer called as? It is called as the scum. So ये डार्क रेडिश ब्राउन जो स्कम है या लेयर है, it is nothing but it is a clot, or also called as a coagulum, which is formed mainly of the network of thread called as fibrins. So वो जो स्कम है वो किसका बना? What is it? It is nothing but it is a clot. And what is it made up of? It is made up of fine network of threads. And what are those threads made up of? They are made up of protein called fibrins. अभी ये फाइब्रिन के अंदर क्या होता है? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड. विच आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. तो ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं, ये जो क्लॉट बनते हैं, उसमें कौन ट्रैप होता है? डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड गेट ट्रैप्ड. So now how fibrins are formed? Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Okay, clot में क्या present होता है? Network of fibrin. How this fibrin is formed? So fibrin is formed by the protein called as fibrinogen. Normally ये fibrinogen inactive form में होता है. Okay, so ये fibrinogen जो inactive form में होता है वो convert होता है उसके active state में. And what is that active state called as? It is called as fibrin. ये जो reaction होता है conversion of fibrin, or you can say conversion of fibrinogen into fibrin, that reaction occurs in the presence of the enzyme which is called as the thrombin. Now how this thrombin is formed? हम पूरा उल्टा देख रहे हैं. फाइब्रिन की वजह से क्लॉट में क्या होता है? फाइब्रिन. फाइब्रिन किस में से बनता है? फाइब्रिनोजन में से. ये कौन बनाता है? थ्रोम्बिन. सो नाउ ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है? थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. ओके, अभी ये थ्रोम्बिन किस में से बनता है? प्रोथ्रोम्बिन में से. ये प्रोथ्रोम्बिन होता कहाँ पे है? अगेन इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. Now students, there are 13 clotting factors which are involved in this complete process of blood coagulation.
सो ये प्रोथ्रोम्बिन जो हम बोल रहे हैं, फाइब्रिनोजन जो बोल रहे हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. सो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिव होकर फाइनली क्या बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं. सो प्रोथ्रोम्बिन इट इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज इनटू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन. नाउ दिस थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन व्हाट, फाइब्रिनोजन. ये थ्रोम्बिन किसके ऊपर काम करता है, फाइब्रिनोजन. एंड दिस फाइब्रिनोजन देन फॉर्म्स अ फाइब्रिन विच इज नथिंग बट अ फाइब्रस स्ट्रैप, कि जिसके अंदर डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड गेट्स ट्रैप्ड. So an enzyme complex thrombokinase is required for above reaction. So ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, थ्रोम्बोकाइनेस. So this complex is formed by a series of linked enzymic reaction which is a cascade process involving a number of factors which are present in plasma in inactive state. हमने प्लाज्मा की स्टडी की थी, राइट. सो उसमें हमने देखा था कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. व्हाट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट. सो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनने के लिए देर इज अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस. एक के बाद एक लिंक्ड रिएक्शंस होते रहते हैं. इसके लिए उसको बोला है, क्या बोला है, कास्केड. एक फैक्टर एक्टिवेट होकर दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है. सो देर इज अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं कास्केड प्रोसेस. सो ये लिंक्ड रिएक्शन में लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. एंड ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्लाज्मा में होते हैं, बट वो कौन से स्टेट में होते हैं, दे आर इन द इनएक्टिव स्टेट इन द प्लाज्मा. अभी ये फैक्टर्स एक्टिव कब होते हैं, so an injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. So जब इंजरी होती है या ट्रॉमा होता है, ये टाइम पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं. दिस प्लेटलेट्स दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस, सर्टेन फैक्टर्स जो पूरे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं. Certain factors released by the tissue at the site of injury can also initiate the coagulation. सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, बट एट द टिश्यू साइट, एट द इंजरी साइट ऑल्सो certain factors are released and these factors can also initiate the process of coagulation. ये पूरे coagulation के process में calcium ions play the very important role in clotting. So clotting के process में Ca2 plus ion plays the very important role. Let us study how this reaction occurs. So mechanism of clotting or also called as the enzyme cascade theory. Now this theory of clotting, it was given by McFarlane and his co-workers. Now there are 3 steps of this theory. हमने already देखे. What is the first step? It is the release of the thromboplastin. Which is the first step? The release of the thromboplastin. अब ये thromboplastin क्या role करता है? We will see that. So injured tissue synthesize exothromboplastin. जो टिश्यू पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन. और हमने बोला कि क्लॉटिंग के टाइम पे प्लेटलेट सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करता है एंड सर्टेन फैक्टर्स आर रिलीज्ड बाय द टिश्यू टू. सो इंजर्ड टिश्यू कौन सा फैक्टर रिलीज करता है? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन. एंड प्लेटलेट जो फैक्टर सिंथेसाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन. राइट. नाउ both these thromboplastin, they react with plasma proteins in the presence of Ca2 plus ion to form the prothrombinase enzyme which is called as the thrombokinase. What is happening? कि thromboplastin, दोनों thromboplastin, that is exothromboplastin and endothromboplastine, they react with the plasma proteins. जो clotting factors है, certain clotting factors के साथ वो react करेंगे किसके presence में? Ca2 plus के presence में. And they form what?
to form the prothrombinase enzyme which is also called as the thrombokinase. अभी ये एंजाइम क्या करती है, इट इनएक्टिवेट्स द हिपेरिन. अभी हिपेरिन बेसिकली क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, राइट. बट जब इंजर्ड टिश्यू हो तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना ज़रूरी है. सो ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, हिपेरिन को इनएक्टिव कर देगा. इसीलिए ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या बोलते हैं, एंटी हिपेरिन. वो हिपेरिन को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट करता है. नाउ व्हाट हैपन्स, द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. अभी ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनी वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द Ca2 प्लस आयन. व्हाट हैपन्स, जो थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनी वो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव स्टेट में होता है उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बिन. And the last stage is conversion of fibrinogen to fibrin, which is the last step. Fibrinogen gets converted into fibrin. So fibrinogen is a soluble protein of plasma. Fibrinogen कैसा है, वो soluble protein है. So thrombin क्या करता है, it polymerizes the monomers of fibrinogen to form insoluble fibrous protein called as fibrin. So thrombin क्या करता है कि ये fibrinogen is a protein, right? It is a protein. वो monomers के बने हो गए. So fibrinogen के जो monomers है उसको वो polymerize करता है and वो किस में convert कर देता है, एक fibrous protein. And what is that fibrous protein called as fibrin? अभी ये fibrin कौन से state में है, insoluble. फाइब्रिनोजन इज इन सोल्यूबल स्टेट. फाइब्रिनोजन के जो मोनोमर्स है वो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ दिस फाइब्रिन फाइबर्स दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑन अ कट और अ वुंड इन विच द ब्लड वेसल्स गॉट ट्रैप्ड. नाउ व्हाट हैपन्स, अभी ये फाइब्रिन क्या करता है, वुंड या कट है वहाँ पे वो क्या बनाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड उसके अंदर डेड एंड डैमेज ब्लड कॉर्पस्कल्स ट्रैप हो जाते हैं. दिस फॉर्म्स अ क्लॉट. व्हाट इज इट फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉट. आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो फ्लूइड oozes आउट ऑफ द क्लॉट विच इज कॉल्ड एज सीरम. क्लॉटिंग के बाद एक पेल येलोइश कलर फ्लूइड बाहर निकलता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द सीरम. So this is the general schematic diagram of the clotting. Phase 1 is the formation of thromboplastin. Phase 2 में this prothrombin is converted into thrombin, and finally in the phase 3 in the presence of this thrombin, fibrinogen is converted into fibrin. This is a schematic representation of the blood coagulation in an injured blood vessel. स्टिम्युलस की वजह से टिश्यू डैमेज होगा जिसकी वजह से प्लेटलेट का ग्रुप मसल स्पाजम, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स गैदर हो जाएंगे एंड देयर बिगिंस द इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म. सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सब्सटेंस, व्हाट इज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सब्सटेंस, थ्रोम्बोप्लास्टिन. अभी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के वजह से प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन. So prothrombin is converted into thrombin. Thrombin, it acts enzymatically on what, fibrinogen. Fibrinogen forms the thread of fibrin and finally fibrin threads at the damaged site step the blood cells and the platelets, and as a result it forms the clot. So this is how the general clotting mechanism takes place. Now I told you that there are clotting factors. Always these blood clotting factors are named in the which way, Roman numbers. See, these are all the Roman numbers के जिससे clotting factors को numbering किया जाता है and they are given the name. So first clotting factor is fibrinogen, which is a plasma protein. Second is prothrombin, which is again a plasma protein. Third is a tissue factor, यानी it is not present in the plasma but it is present in the plasma membrane.
Fourth is the calcium ion, and it is what is its nature? It is an inorganic ion. Fifth is proaxylarine, right? And it is which type of structure? It is the plasma protein. उसका chemical nature क्या है? Protein. and ये protein कहाँ पे है? Plasma के अंदर. Now ये जो sixth clotting factor है, it is no longer used and it is now believed to be same as factor 5. So basically proaxylarine उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरिन. सो बेसिकली सिक्स्थ फैक्टर इज सिमिलर टू व्हाट? द सिक्स्थ फैक्टर इज सिमिलर टू द फिफ्थ फैक्टर. इट इज नाउ नो लॉन्गर यूज्ड. Then there is the seventh factor. It is called as proconvertin, which is also a plasma protein. Eighth is the anti-hemophilic factor or anti-hemophilic globulin. It is also called as anti-hemophilic factor or anti-hemophilic globulin. Again, it is a plasma factor. Ninth one is plasma thromboplastin component. What is it? It is plasma thromboplastin component. Okay. It is again a plasma protein. 10th is the Stewart factor, which is again a plasma protein. 11th one is plasma thromboplastin antecedent, which is again a plasma protein. 12th is Hegman factor, which is again a plasma protein. And 13th one is fibrin stabilizing factor, and again it is a plasma protein. So ये 13 factors में से the 11 are plasma proteins. The third factor, that is a tissue factor, it is which type of material? It is the plasma membrane, or also it is called as the thromboplastin. And the fourth factor is the calcium ion, which is also an inorganic ion, right? So that was regarding the blood clotting mechanism. Now another fluid which is present in the tissue or which is present in the human beings is the lymph. This lymph is also called as the tissue fluid. Now see students, the blood flows through the blood vessels. Now जब blood vessels से flow होता है, so some of the fluid it oozes out of the blood vessel. Okay, the blood, suppose ये blood vessel है, okay, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है, राइट? द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स. नाउ सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स वो बाहर आता है. ये जो बाहर फ्लूइड आया एंड ये फ्लूइड जो बाहर आया एक वो दूसरे वेसल में चला जाता है. दिस वेसल इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ वेसल. सो ये जो फ्लूइड ब्लड में से निकलता है, ब्लड वेसल में से बाहर निकलता है, that fluid is called as the lymph. The fluid which oozes out of the blood vessel is called as the lymph. Now lymph का composition is similar to that of plasma. क्यों? क्योंकि वो blood में से बनता है. सिर्फ difference ये है कि plasma के अंदर जो proteins रहते हैं, these proteins, large proteins which are present in the plasma, they are absent in the lymph. So as the blood passes through the blood capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels, right? ये blood vessel है, ये जब blood vessel से flow होता है, थोड़ा fluid बाहर आता है. ये जो फ्लूइड बाहर आता है इट अकोमोडेट्स बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड. नाउ ये सब्सटेंसेस क्या होता है? ये वाटर होगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो गए, बट ये जो प्लाज्मा के जो लार्ज प्रोटीन्स हो गए एंड ब्लड के जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, नॉर्मली ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये फ्लूइड में रहेंगे नहीं. This fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in the plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occurs through this fluid. अभी ये blood vessels है, okay? Now ये cells है,
ओके, ब्लड वेसल में से जो भी मटेरियल है वो कहाँ पे जाते हैं, सेल के अंदर। सो ये ब्लड वेसल में से कोई भी मटेरियल को सेल में जाना है तो उसको किसके थ्रू पास होना है, इट हैज़ टू पास थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड। नाउ जैसे ब्लड वेसल से फ्लो होता है, सो सेम वे देर आर lymphatic vessels too. So elaborate network of vessels called lymphatic system, it collects this fluid and drains it back to the major veins of the body. अभी क्या करता है, होता है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है जो बाहर निकला है उसको कलेक्ट कौन करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है। एंड आफ्टर कलेक्टिंग इट, ये लिम्फेटिक सिस्टम ये फ्लूइड फिर से किसको दे देता है, वेन्स में, यानी फिर से वो फ्लूइड तो आ जाता है कहाँ पे, ब्लड में। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लिम्फ बनने का ज़रूरत क्या है। सो व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, अभी ये लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल है, सो एट सर्टेन प्लेसेस इन द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स नोड्स होते हैं, ये नोड्स को बोलते हैं लिम्फ नोड्स, इसको वो क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। सो जैसे ही लिम्फ ये लिम्फ नोड्स को क्रॉस करेगा, ये लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, अगर ब्लड में कोई भी डैमेज एलिमेंट है या फॉरेन पार्टिकल है उसको वो ट्रैप कर देंगे, उसको ट्रैप करके क्या करेंगे, ये ब्लड को क्या करते हैं, प्योरीफाई करेंगे। एंड फाइनली वो जो फ्लूइड प्यूरीफाई होकर गया वो फिर से वो कहाँ पे डाल देंगे, वेन्स में। ओके, सो दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज द लिम्फ। सी, ब्लड में से फ्लूइड बाहर निकला वो टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, राइट। अब ये टिश्यू फ्लूइड किस में चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। सो जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है उसको बोलते हैं लिम्फ, एंड ये फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर होता है तब उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ? द लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, its composition is similar to the plasma. It contains specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. So lymphatic system में basically lymph nodes होते हैं, ये lymph जब lymph nodes को क्रॉस करता है तो उसके अंदर जो भी डैमेज पार्टिकल है ब्लड के अंदर उसको वो ट्रैप करता है, एंड ये प्योर ब्लड को फिर कहाँ पे ड्रेन कर देता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। It is also an important carrier of nutrients, hormones, etc. Exchange of materials between the blood and the tissues occurs through this fluid. Fats are absorbed through lymph in the lacteals which are present in the intestinal villi. So basically digestive system में आपने स्टडी किया होगा फैट्स का एब्सॉर्प्शन, फैट का एब्सॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड नहीं कर सकता है, पहले द फैट विल एंटर इनटू द लैक्टियल्स, lacteals are what, they are the lymphatic vessels which will absorb the lymph, which will absorb the fat. So fat are absorbed through lymph in lacteals. So these lacteals are the lymphatic vessels which are present in the intestinal villi to absorb the fat material. So that is regarding the lymph. Now we will be studying the circulatory pathways. The circulatory patterns are of two types, open or closed. अभी circulation के दो ways हो सकते हैं, either it is closed circulation or it is open circulation. We have studied this when we studied the animal kingdom. So first of all, what is open circulatory pathway? Open circulatory system is present in arthropods and mollusks, in which the blood pumped by the heart passes through the large vessels open into the spaces or body cavities which are called as sinuses. So जो भी हार्ट ने ब्लड पंप किया, बॉडी में सिर्फ एक ही ब्लड लार्ज वेसल रहता है, वो फ्लूइड कहाँ पे आ जाएगा, ये लार्ज वेसल में, एंड लार्ज वेसल ये फ्लूइड को कहाँ पे पंप करती है, बॉडी कैविटीज़ में, विच आर कॉल्ड एज द साइनसेस. सो ब्लड पासिस थ्रू द बॉडी कैविटी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेसल्स या पैसेजेस नहीं है कि जिससे वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है.
Whereas in annelids and chordates, they have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. So, open circulation में blood flows through the blood sinuses, whereas in the closed circulatory system, the blood is circulated through the blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of the blood can be precisely regulated. Now, what are the types of blood circulation and hearts in vertebrates? Fishes, amphibians, reptiles, crocodiles, aves and mammals. So, number of heart chamber, fishes में दो रहते हैं, of which one is atria, one is ventricle, and the type of circulation is single circulation. Single circulation is blood passes through the heart only one times. Amphibians have three chambered heart in which there are two auricles, one ventricle, and it is incomplete double circulation. Reptiles, they have three chambered heart with two auricles and one ventricles, and they also have incomplete double circulation. And finally, crocodiles, aves and mammals, which have purely four chambered heart, of which two are auricles, two are ventricles, and they show the double circulation. Now we can see the evolutionary sequence is present in the vertebrate heart. Vertebrates में हम लोग हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस दिखता है, जैसे कि फिशेस में टू चेम्बर्ड है, देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड है, बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चेम्बर्ड है. तो हम देख सकते हैं कि उसमें इवोल्यूशन हैव टेकन प्लेस इन द vertebrates of hearts of the vertebrates. Fishes can handle only deoxygenated blood. जो fishes का heart है वो कौन से blood को handle कर सकते हैं? सिर्फ deoxygenated blood. Therefore, heart is often called as the venous heart. As the heart of the fishes can handle only deoxygenated blood, their heart is called as the venous heart. In fishes, the heart pumps out the deoxygenated blood, which is oxygenated by gills and supplied to the body parts, from where the deoxygenated blood is returned to the heart. So, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे फिर से आएगा? हार्ट में. सो हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वन टाइम्स. सो सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन. In amphibians and reptile, the heart receives both oxygenated and deoxygenated blood. So ये हार्ट के पास दो टाइप के ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, एंड हेंस देयर हार्ट इज ऑफन कॉल्ड एज arteriovenous heart. Which type of heart it is called as? Arteriovenous heart. The left atrium receives oxygenated blood from gills, lungs or the skin depending upon the respiratory organ, and the right atrium receives the deoxygenated blood from the other body parts. So, left auricle, atrium is also called as auricle. So, the left auricle, it receives the oxygenated blood, whereas the right auricle, it receives the deoxygenated blood from the various part of the body. However, they get mixed up in single ventricle which pumps out the mixed impure blood. अभी क्या होता है? वेंट्रिकल एक ही है, दो ऑरिकल्स है, वेंट्रिकल्स एक ही है. सो राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आकर तो क्या हो जाता है? मिक्स ही हो जाता है. एंड वेंट्रिकल्स में से क्या होता है? ब्लड का ब्लड कहाँ पे जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से. So, impure blood, mixed blood basically is circulated by the ventricle.
Such type of the circulation is called as incomplete double circulation. Whereas in crocodiles, birds and mammal, crocodile is a reptile, so it is an exception कि जिसमें 4 chamber heart होता है. So in crocodiles, birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same side. क्या होता है? Birds, mammals and crocodile में 4 chambered heart होता है. So left part of the heart is separated from the right part of the heart. Left part of the heart receives oxygenated blood and right part of the heart receives the deoxygenated blood. And ये oxygenated and deoxygenated blood कभी भी mix होगे नहीं. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, 2 separate circulatory pathways are present in these organisms, and hence these organisms they have double circulation. The right portion of the heart corrects the impure blood from the body, send it to the lungs for purification, while left portion takes the pure blood from the lungs and distributes it to the whole body. So left part is called as the systemic heart and the left part of the heart is और right side में जो circulation होता है वो pulmonary circulation बोलते हैं. The right portion of the heart is called pulmonary heart and the left portion of the heart is called systemic heart. क्यों right portion को pulmonary heart बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से blood कहाँ पे जाता है? lungs में जाता है. Whereas left portion को क्या बोलते हैं? systemic heart. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में से ब्लड कहाँ पे जाता है? टू ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. दिस इज टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड हैज टू पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर बीइंग डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक ऑर्गन्स. ब्लड ऑर्गन्स को मिले उससे पहले इट हैज टू पास टू द हार्ट हाउ मेनी टाइम्स? 2 times, and therefore it is called as a double circulation. See here students, it will be more clear. This is a single circulation. Heart pumps out deoxygenated blood. ये deoxygenated blood कहाँ पे जाता है? Gills में. Now gills they take the oxygen from the water, okay, and they give out carbon dioxide to the water. Now अभी gills में से कौन सा blood निकलेगा? Oxygenated blood. This oxygenated blood pass through the body parts. बॉडी पार्ट्स में यह ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा. सो बॉडी पार्ट्स कौन सा ब्लड रिलीज करेगी? डीऑक्सीजनेटेड, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट. सो ब्लड हमें हार्ट में ब्लड कितनी टाइम आया? एक ही बार. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द सिंगल सर्कुलेशन. द नेक्स्ट वन इज डबल सर्कुलेशन. वी विल सी दैट. सो सी स्टूडेंट्स, द राइट ऑरिकल में से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में से सी राइट ऑरिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी. वेयर इट कैरीज इट टू द लंग्स. नाउ लंग्स में से ये ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा एंड देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लंग्स इज कैरीड by the pulmonary vein to the left auricle. कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल में से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में से अयोटा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन्स ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड बाय द मेन वेन्स called vena cava into the right auricle. So before the blood passes through the organs, it has to pass to the heart 2 times. What is it called as? It is called as the double circulation. So this is regarding the 2 types of the circulatory pathway. One is single circulation and another one is not circulatory pathway. Types of the circulation, one is single circulation and another one is the double circulation. I end my lecture here. Students, in the next video we will be studying regarding the components of the human circulatory system. हमने blood as a component study कर लिया. Now we will be studying the another main component, that is the heart. So we will be studying regarding the structure of the heart in the next chapter, in the next video. Thank you students.